Very warm good evening to one and all. Welcome back to the today's session. Today we have our guest speaker, Dr. Professor Pankaj Lathiya sir, professor in community medicine from CNKHMC Vyara College, Gujarat. So we welcome you, sir. We welcome all the participants. Today's topic will be a very interesting topic regarding the like hiding the silent emotions in one's body. So over to you, sir. Okay. Thank you, madam. Okay, let's start, madam. Yes, sir. Are you able to hear, madam? हाँ हाँ. Okay. Can I start? Yes, sir. Absolutely, Okay. sir. So, good evening, everyone. Today we will see silent suffering of the Natrum personality, a homeopathic insight into unexpressed emotions and unresolved conflict. This is a very interesting topic nowadays because we all are living in 21st century, and this is the most common clinical problem we can see in our daily practice. So let's see. Father of psychology, Sigmund Freud said, unexpressed emotion will never die. They are buried alive and they will come forth later in uglier form. हम सबको मालूम है कि डेली हमारे लाइफ में, फैमिली में, सोसाइटी में, जहाँ हमारा वर्क प्लेस है, वहां पे कुछ ना कुछ हमारा इमोशन जो है, फीलिंग्स हमारी है, वो हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली सप्रेस करते हैं. तो सिगमंड फ्रूड क्या कहते हैं कि कभी भी हम जो सप्रेस करते हैं इमोशन, वो कभी भी डाई नहीं हो सकता है. वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम अग्लियर फॉर्म या डिसीज फॉर्म में, कॉम्प्लिकेटेड डिसीज फॉर्म में बाहर आ सकता है, ऐसा उसका कहना है. So first of all, what is emotions? Emotions is a complex reaction pattern in our conscious experience. It is an around state, means it is a conscious mental reaction which is experienced as a strong feeling towards specific object, result in physiological and behavior changes in the body. As you all know that each and every emotion are good for our body. There are two types of emotion: negative emotion and positive emotions. Positive emotions will react in a positive way, and negative emotion will create the problem for our body. So it is our conscious experience each and every person's feel every day in life. So what does it mean to suppress emotion? What are the common causes that lead people to hide or hold back their feelings? So first of all, as you all know, what is disease? As per organon disease, that is a deviation from the state of health, which is expressed by signs and symptoms as a result of dynamic derangement of the vital force. That is a disease. And what is cure? According to Hahnemann, a true cure means not just getting rid of symptoms, but also removing the root cause and fully restoring the person's health. Means there are no any effect without the cause. So if you want to treat the patient, if you want to cure the patient, then we must remove the cause of the disease. That is a cure. And what is the suppression? Suppression means pushing down, hiding symptoms instead of letting them come out naturally. The word comes from the Latin suprimere, which means press down and prevent from being expressed. Means जो हमारी फीलिंग्स है, नेगेटिव इमोशन है, जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो हम प्रेस डाउन करते हैं, उसको हम सप्रेशन बोलते हैं. Suppression occurs whenever the patient's symptoms go against the direction of cure. When suppression happens, the original symptoms may go away, but the illness can move deeper into the body and often affecting more important or vital organ. This leads to more serious health issue over time. Commonly, suppression in homeopathic field is a phenomena, a process that causes disease expression to disappear without changing the underlying disease force, that is a miasm. And thus, this current disease state may not be true or complete state, but it is because of the suppression of the earlier disease phenomena, and therefore suppression is not the actual primary cause of the disease state, but it is the philosophical explanation of the current disease state. As we all know that there are headings law of cure and a direction of cure. So any symptoms
which is goes against the direction of cure, that is a suppression. And जब भी हम सप्रेशन करते हैं कोई भी मेडिसिन, नेचुरल एलोपैथिक मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन से, तो क्या होता है, हमारा जो ओरिजिनल सुपरफिशियल सिम्टम्स है उसको हम रिमूव करते हैं, मगर अंडरलाइन कोज जो है, जो होम्योपैथिक में हम बिलीव करते हैं कि वो मायाजम है, तो उसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं सप्रेशन से, मगर वो डीपर एंड डीपर वो वाइटल फोर्स को डिरेंज करते हैं, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो अग्लियर फॉर्म और वेरी कॉम्प्लेक्स डिसीज फॉर्म में वो बाहर निकलता है। Then what is emotional suppression? Emotions are a natural and essential part of being human. Everyone experiences a wide range of feelings such as happiness, sadness, anger, fear, surprise, and disgust, which play a significant role in how we respond to life situation. However, However, not all individuals are comfortable expressing or even acknowledging their emotion. When someone fights, it's difficult to process their feelings, and they may begin to suppress them either intentionally or unconsciously. So, I have already told you there are two types of emotion. These all are the positive emotions and negative emotions: sadness, anger, fear, which we all have in our lives. But whenever individuals are not comfortable expressing देयर इमोशन, जब भी हम इंडिविजुअल कोई भी सिचुएशन है उसमें इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, देन वो एक सप्रेशन रूप में फीलिंग्स को हम फ्यूचर में हेल्थ के लिए बहुत डेंजर जोन में ले जा सकते हैं। तो व्हाई वी सप्रेस इमोशन? मे बी somehow inability to cope up with strong or all-helming emotion, avoidance of the further pain or distress, self-protection, especially in emotionally unsafe environments, pressure to conform to social norms and expectation, fear of judgment, rejection, invalidation, early childhood conditioning such as being told don't cry or be good, which teaches the child to hide or deny their emotion. So these all are the reason. ये सब ऐसे रीजन है कि जिसमें हम इमोशंस को सप्रेस करते हैं। एक तो मान लो कि कोई व्यक्ति है वो कैपेबल ही नहीं है उसका इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। दूसरा, उसको फर्दर जो पेन और डिस्ट्रेस है वो लाना नहीं है, उसको अवॉइड करना है। उसको अंदर से फियर है कि मैं ये एक्सप्रेस करूंगा तो दूसरा पेन और डिस्ट्रेस आएगा, तो वो सप्रेस करेगा। सेल्फ प्रोटेक्शन, मान लो कि ऐसा एनवायरमेंट है कि कोई बॉस है कि कोई हेड है, कोई लीडर है, उसके सामने उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे मेरा इमोशन को एक्सप्रेस करना चाहिए, तो वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी सप्रेस कर सकता है। आइदर कोई ऐसा नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की कि आपको भी बोलना नहीं है, आप छोटे हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए, आप फीमेल है, आपको नहीं बोलना चाहिए, तो भी इमोशन को सप्रेस करते हैं। आइदर उसको ऐसा कोई रिजेक्शन और जजमेंट का डर है कि भाई मैं मेरा इमोशन को एक्सप्रेस करूंगा तो मुझे कोई जज करेगा, मुझे कोई रिजेक्ट करेगा, मुझे कोई छोड़ देगा, नहीं बुलाए, तो उसको ऐसे इमोशन सप्रेस करना होता है। अर्ली चाइल्डहुड में कभी कभी हम चाइल्ड को क्या सिखाते हैं कि आपको रोना नहीं है, आपको एकदम स्ट्रॉन्ग बनना है, गुड बनना है। तो बच्चे जो है उसके माइंड में ऐसा थ्योरी चलती है कि भाई मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग बनना है, मैं अगर सबके सामने रोने लगूंगा तो मुझे सब वीक मान लेंगे। तो बच्चे छोटे जो बचपन है उससे ही वो उसके फीलिंग्स को सप्रेस करते रहते हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो हैबिट बन जाती है। तो ऐसी बहुत सारे रीजन है जहां लोग इमोशंस को सप्रेस करते हैं। So what are the consequences? When emotions are consistently suppressed, individual may start to bottle up or internalize their feeling. Emotional responses become muted or repressed even unconsciously. This can trigger a constant state of internal stress, often keeping the body in a heightened fight or flight mode. तो क्या होता है, जब भी हम इमोशन को सप्रेस करते रहते हैं तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो हमारा जो पीएनए एक्सिस है उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो वो जो इमोशन है वो बोलते नहीं है, मगर वो अंदर रिप्रेस होते हैं, तो हमारा जो भी डिसीज प्रोसेस है उसको ट्रिगर करते हैं। तो इन फ्यूचर वो फ्लाइट और फाइट मोड से कुछ ना कुछ डिसीज फॉर्म में हमको अलार्म करते हैं, वार्निंग देते हैं। What is outcome? Emotional suppression can become a contributing factor to chronic disease. तो फ्यूचर में कोई chronic disease का एक contributing factor है इमोशन, जो हमने सालों से किया है। It is not a healthy coping strategy and often leads to mental and physical health issue. एक्चुअली हर एक ह्यूमन बीइंग है उसको एक नेचुरल कॉपिंग सिस्टम दिया है भगवान ने, मगर दिस इज नॉट अ हेल्दी कॉपिंग सिस्टम।
Okay, because this is a emotionally suppression. Long-term suppression may result in conditions such as depression, anxiety, digestive problem, autoimmune disorders, and many more. We all believe that maximum disease mainly from the psychosomatic disease. Already Dr. Animan told in the organ of medicine because sarkar what is psychosomatic disease. So these all are the mainly because of the emotional suppression. So by exploring and understanding the root causes of emotional suppression, individuals can begin to find healthier and more constructive way to express their feeling. तो हमको वो अंडरस्टैंडिंग लाना होगा, वो एक्सप्लेनेशन लाना होगा, वैसे काउंसलिंग करना होगा पेशेंट को कि जो भी आपका इमोशन है, सभी को गुस्सा आता है, सभी को चिंता रहती है, उसको हम कैसे कोप अप करें, उसको बाहर कैसे निकालें कि दूसरे को जो हर्ट ना हो और हम भी हर्ट ना हो. ऐसे हमको काउंसलिंग और प्रैक्टिस और ट्रेनिंग देनी होगी. इन होम्योपैथी रिकॉग्नाइजिंग दिस सप्रेस्ड इमोशन इज क्रूशियल, especially in remedies like those from the Natrum group, where inner conflict and silent suffering are often central to the case. Homeopathic takes a holistic approach with mental and emotional symptoms playing a crucial role in selecting the medicine. Also, Dr. J.T. Kent has told in their book, mental symptoms are the main and core of the symptoms of the cases. So, we must give the importance to the emotional symptoms and mental symptoms. So let's see, we will talk about the Natrum group, the understanding of the symptoms of Natrum group with correlation of PNI axis that will help in identifying the personality profile of such patients of Natrum with pathological understanding of disease and clinical approach. There are so many medicine which are useful in case of emotional suppression, Natrum group, magnesium group, calcarea group, staph, lycopodium, phosphoric acid. But today we will talk about the Natrum group. What are the emotions of the Natrum? Psychoneuroimmunology can be understood as the empirical realization of the biopsychosocial paradigm in the medicine. It has been shown that psychological, neuronal, and hormonal activities influence the immune system. In the opposite direction, cytokines can act on endocrine gland and neuron and alter an individual's subjective experience and behavior. So this is all about the PNA axis, psycho, neuro, immune system and endocrine system. हम सबको मालूम है जब हमारा माइंड जो साइक जिसको बोलते हैं, मन जिसको बोलते हैं, वो डिस्टर्ब होता है तो हमारी अंदर की जो न्यूरॉन सिस्टम है वो डिस्टर्ब होती है. वो जो हमारे अनहेल्दी न्यूरॉन्स है वो सिक्रेट करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, और उसकी डायरेक्ट इफेक्ट हमारी एंडोक्राइन के ऊपर होती है. और हमको मालूम है कि एंडोक्राइन सिस्टम वो हमारी बॉडी की सेंट्रल सिस्टम है जो मेनी फंक्शन को हैंडल करती है. तो जब हमारी एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा और हमको कुछ ना कुछ डिसीज के फॉर्म में वो गिफ्ट देंगे. So what are the sphere of action and pathogenesis of the natrum? Through the great vegetative nervous system, natrum salt acts especially on the blood, lymphatic vessels, and glandular system. On the blood, it causes a dyscrasia resembling very closely a probutic disorganization, with disposition to angry eruptions, ulcer, and inflammations. On the lymphatic system, it deteriorates its fluid, leading to disintegration of the tissues. It increases the secretion of the glandular system. It also produces vascular enlargement of the spleen. And lastly, it affects the genitourinary organ and spinal cord. These all are the sphere of action. I think as you all know that because it is written in the Materia Medica. So I don't want to go in the detail. The typical keynote symptoms of the natrum, which we will see in our cases. The natrum personalities are melancholic, depressed, sad, reserved, along with depression. There is marked irritability, crossness, and feeling of isolation. The cause of depression might be the death of loved one, broken relationship, broken heart, or divorce. It is useful in cases of acute as well as chronic grief, where it is followed by suicidal thoughts. Psychic causes of disease, ill effect of grief, pride, anger. The patients become an introvert and desire to be alone. There is silent grief. The patient weeps when she is alone. It seems that the patient needs sympathy, but to the contrary, the patient is aggravated by consolation and even leads to anger. These are the core and nucleus and main symptoms, mind symptoms of the natrum, which will be very useful in our cases.
They recollect past unpleasant memory in their mind and dwell on them and get more disheartened by the grief. After getting hurt in a relationship, the patient develop a kind of fear for getting attached to someone or getting into a close relationship. She is unable to control her affection and falls in love with someone who she can't get. Unattendable person like a married man, coachman. The patient is sympathetic and emotionally very sensitive. They don't want to get hurt and neither want to hurt anyone. They always listen to the pain of others and imagine themselves in that situation and feel their suffering. They are taken and try to avoid company because they have been offended. They have aversion to presence of others, especially strangers, and that too during urination, and thus can't pass urine in the presence of others. तो नेट्रम की जो मेन फीलिंग है, कोर है, वो क्या है? उसका ग्रीफ है, ब्रूडिंग है। वो एक कोई भी चीज के साथ, पास्ट के साथ स्टक हो जाता है, वहां से वो आगे ही नहीं जा सकता है, उसके हिसाब से उसको मेलेंकोलाई, सैड, वीपिंग, वो सब होता है। उसमें मान लो कि उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उसको टाइम दे सकते हैं, लव दे सकते हैं, केयर दे सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। वो आइदर मैरिड मैन है और कोई कोचमैन है, ड्राइवर है, कोई वर्कर है, तो उसके लव में वो हो सकता है। तो उसके साथ वो शादी भी कर सकते हैं फ्यूचर में। तो ऐसे जो भी घटनाएं है वो हम सोसाइटी में देखते हैं। तो इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि हमको सबको नेट्रम देना है, मगर हमको डीप हिस्ट्री लेना है, पर्सन एज ए होल जो भी टोटालिटी बने उसके ऊपर वन ऑफ द मेडिसिन वो नेट्रम है। ठीक है। और नेट्रम पेशेंट कभी भी किसी के प्रेजेंस में यूरिन पास नहीं कर सकता है, और एमरागेसिया कभी भी किसी के प्रेजेंस में स्टूल पास नहीं कर सकता। So this is all about the Natrum and enough for selection of the medicine. Now I'm talking about my original study and original research work which I have done during my PhD study. So what I have done, there are review of literature. I have taken lots of review of literature, but I am going to discuss with you only 2 review of literature that is most important for my topic. One author, Dr. Lagdi Sapar, who is written in Hahnemannian textbook of classical homeopathic for the professional. He has explained wonderfully level of suppression. First, always outer physical level, then when it suppresses, it goes into deeper physical level, then deepest physical level, and lastly, emotional level. So first of all, physical, but outer, deeper, and deepest, and then emotions will be affected. Dr. Hammer, he has done wonderful work and he has wrote in a German New Medicine, Structure, Emotional and Biochemical. He has described very well unresolved emotional conflict which are locked up in our body and it will create physical disaster. And he has given a wonderful example like colon affection, which is mainly because of ugly undigestible complaint. Larynx problem because of the fear or pride. There are lungs problem because of the fear of death or suffocation. There are so many examples. If you want to read, and you go for that. So what are the aim and objective of my study? To explore the silent emotional struggles of the Natrum personality, understanding how unspoken grief and inner turmoil impact overall health, and how homeopathic offers a path towards healing and integration through individualized empathy. And second, my objective to determine how effectively remedies from the Natrum group address the diseases arising from deeply buried emotions and internalized conflict in the पेशेंट। तो मेरी जो भी स्टडी है उसमें मैंने 300 केसेस लिए हैं, बहुत सारी मेडिसिन दिया है, मगर मैक्सिमम केसेस में जो नेट्रम आ रही है, इसलिए मैंने इस वेबिनार में नेट्रम को हाईलाइट किया है। What was my materials and methods? I have selected types of study, descriptive, observational type of clinical study, source of data, my cases from my private clinic, Home Homeopathic Clinic, Surat. Materials I have used, case record perform of my clinic. Sample size, that is 300. Sampling method, I have selected randomized method. Materials which I have used, case record perform according to Dr. Hahnemann's guidelines and homeopathic software like Homepath, Radar 10. Selection criteria for the patient, inclusion criteria and exclusion criteria. Inclusion criteria, that is cases which had history of emotional suppression, cases had been taken from school going children to old age up to 70 years and both sexes. Exclusion criteria, I have excluded pregnant women,
and patient on concurrent suppressive treatment throughout the duration of homeopathic treatment. मीन्स जो पेशेंट स्टीरॉइड ले रहे हैं, ठीक है, उसको हमने एक्सक्लूड किया है क्योंकि उसमें ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेशन है, तो हम उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से क्योर नहीं कर सकते. Response analyze. I have analyzed all the response in 4 ways: significant improvement, moderate improvement, status quo, and left the treatment. These are the common data collection. So data I collected from my study, I am going to present. I have taken 300 cases. Male patient were 97 and female 203 patients. But out of 97 male patients, I have prescribed Natrum group and Natrum medicine in 52 patients. And out of 203 patients, I have prescribed Natrum in 104 patients. So in majority of the patients, there are emotional trauma, psychological trauma, and grief, brooding. So I have selected Natrum group on the basis of totality. Nature of the disease, I have taken all the disease. There are chronic in nature. Age group, you can see I have taken different cases from various ages, but you can see maximum cases, 115 cases came from the 31 to 40 years of age. And out of 101 5 cases, 68 cases where I have given Natrum group and Natrum medicine. Treatment, I use constitutional medicine with intercurrent remedy where it was required. So I have seen out of 300 cases, in 177 cases, there were significant improvement. And out of 177 cases, there are significant improvement in 96 cases where Natrum was given. So that is a very significant improvement, and I got a wonderful result with the various medicine of the Natrum group. You can see female, where majority female are suffering because of emotional suppression in compare of the male. These are the age-wise distribution. You can see majority of the cases from the 31 to 40 years of age, then 21 to 30 young age, and then 41 to 50 years of age. These all are the diagnosis, list of diagnosis. Out of 300 cases, I have treated migraine in 62 patients. And out of 62 patients, I have prescribed Natrum in 40 patients. Similar way, out of 300 cases, I have prescribed homeopathic medicine in 37 cases of hypothyroidism, and out of 37 cases, I have prescribed Natrum in 18 cases. So you can see majority of the top five disease: migraine, hypothyroidism, depression, eczema, and psoriasis, where I have used homeopathic medicine, especially from the Natrum group. These all are the disease condition in which I have prescribed homeopathic medicine. These are the list of medicine. These all are the medicine which I have used during my PhD study. But out of 300 cases, in 66 cases, I have prescribed Natrum new. In 33 cases, I have used Natrum carb. In 21 cases, Natrum pose was given. And in 17 cases, Natrum sulf. In 11 cases, Natrum ars. And in 8 cases, I have prescribed Natrum silicata. So I have mainly used 6 Natrum medicine. There are another Natrum medicine which we can prescribe, but these are the most commonly in patients which we can see as per totality. These all are the causative factor elements from emotional suppression, but from which. So I have seen during my PhD study, there are 300 cases. Out of 300 cases, in 118 cases, there are anger suppressed and intolerance of contradiction. And out of 118 cases,
Natrum was given in 80 cases. Love, disappointment, grief, brooding, and weeping. This is the key prescription and misuse of the Natrum. There are number of remedy for the love, disappointment, but Natrum in maximum cases we will misuse. Love, disappointment, and grief, brooding, and weeping, I have prescribed in 45 cases where Natrum was given. Death of loved one, parents, friends, melancholic weeping and sadness, I have used in 15 cases. Loss of his job, position, reputation, money, and business, I have used Natrum in 5 cases. So these all are the, so you can see maximum anger, suppress, intolerance, contradiction, and love, disappointment, and death of loved one, where we can think about the Natrum group. Out of 300 cases, I have seen significant improvement in 177 cases, moderate improvement in status quo in few cases, and left the treatment in few cases. So let's start. I don't want to discuss every case with you because we have a short time. I have to complete within an hour and a half hour already completed. So one or two cases I am going to discuss with you. Then we will see only totality and medicine, and lastly discussion, summary, and conclusion. So this is a case one. This is a case of the 18 years old BAMS student. It is known case of infectious eczematic dermatitis since 7 years. Patient had taken treatment Ayurvedic or allopathic, but she got only temporarily. Complaint of eczema, itching 3 mark, which is relieved by cold water, watery and thin discharge, small vesicular type of eruption around eczema with reddish irregular border. Past history alopecia areata, which was treated by the allopathic medicine. Family history: mother suffering from the ulcerative colitis, father and sister are suffering from the eczema. So there are strong family history of the psoriatic miasm. Physical general: appetite 3 times per day, thirst 8 to 9 glasses per day, desire sour 2 mark, salt 3 mark, spicy 2 mark, aversion milk 3 mark, stool and urine not significant, sleep 7 to 8 hours, thermal, hot and headache because of the summer and sun. Menstrual history regular 3 to 5 days, and there are complaint of the dysmenorrhea. These are the mental symptoms. मैंने पेशेंट की जो लैंग्वेज है गुजराती, हमारे यहाँ गुजराती पेशेंट यूज करते हैं, तो गुजराती को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, मगर उसको ऐसे ही रहने दिया है क्योंकि पेशेंट की जो ओरिजिनल फीलिंग है वो इसमें हमको दिखेगी. अगर मैं उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करूंगा या कुछ इंग्लिश में ट्रांसफर करूंगा तो उसके ओरिजिनल जो इमोशन है वो हम नहीं ढूंढ पाएंगे. ठीक है, तो मैंने उसको पहला क्वेश्चन किया, तुम्हारा स्वभाव विषय जनाओ, आपके नेचर के बारे में मुझे बताइए. ठीक है, तो पेशेंट क्या बोलते हैं कि मुझे बोलने की आदत ज्यादा नहीं है, मैं चाइल्डहुड से मेरे कुछ ही फ्रेंड है, मुझे कुछ बात करने की भाई इच्छा नहीं है, घर में भी मैं अकेले रहना ही पसंद करता हूँ और शांत हूँ, एकदम शांत हूँ. ठीक है, मैंने बोला कि भाई आपका और मुझे नेचर समझाए, तो बोले कि घर में कोई भी गेस्ट भी आते हैं तो मैं रूम में चली जाती हूँ, मुझे किसी के साथ कन्वर्जेशन करना अच्छा नहीं लगता है और मैं किसी को सामने से बुलाती भी नहीं हूँ. मैंने बोला क्यों ऐसे करते हैं आप, तो उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ और जब भी मैं मिरर में भी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जो कंडीशन है, डिसीज कंडीशन, इससे ऐसा लग रहा है कि मुझे मैं अच्छी नहीं दिख रहा हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आता है, मगर मैं बाहर नहीं निकालती, वो अंदर से अंदर रखती हूँ. कॉलेज में भी मुझे कोई और गेस्ट में मुझे पूछे कि आपको क्या दिक्कत है, कोई मेरे कंप्लेन के बारे में भी पूछते हैं तो भी मुझे अंदर से गुस्सा आता है. उसको फ्रिक्वेंटली दूसरे क्वेश्चन किए हैं. ठीक है, उसने ऐसे आंसर दिया है. उसने ऐसा बोला कि मुझ में ऐसा लग रहा है कि मुझ में कुछ कमियां है जो दूसरे में नहीं है, और बाद में उसने ऐसा बोला है कि मेरा नेचर ऐसा ही है, बाद में आप जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं. तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ किया है, उसको एंगर के बारे में पूछा है, फियर, ड्रीम्स और स्टडी के बारे में पूछा है. तो एंगर में उसने ऐसा बोला है कि मेरी जो छोटी सिस्टर है उसके ऊपर मुझे ज्यादा गुस्सा आता है और घर पे ही
जो गलत होता है उसमें मैं गुस्सा करती हूँ, बाहर वो ज्यादा गुस्सा करती नहीं है, ठीक है। और गुस्सा जब भी आता है तो वो अंदर ही रखती है, और उसको जो भी रोना आता है तो अकेली जो जब है तभी रोने देती है, किसी के सामने वो रो नहीं सकती है। उसको फ्रॉक का और रेट का फियर है, उसको डेली रूटीन का ड्रीम्स आ रहा है, मगर वो फ्रीक्वेंट नहीं है, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। स्टडी में वो एक्सलेंट थी, और उसको ड्यूरिंग एग्जाम थोड़ी एंजाइटी रहती थी। उसको एक इंसिडेंस हुआ है कि उसको एमबीबीएस में जाना था, उसको 87% आया था। तो क्या था, उसको 3 लाख रुपीज की जरूरत थी। तो उसका रिलेटिव उसको हेल्प करने के लिए भी रेडी था, मगर वो सोच रही थी कि मुझे भीख मांग के पढ़ना नहीं है, वो डिग्निफाइड पर्सन है, तो उसको ऐसे किसी की हेल्प चाहिए नहीं। तो बाद में उसको कंटिन्यू थॉट्स आ रहा है कि मुझे कहाँ जाना था और मैं कहाँ आ गई, क्योंकि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है अभी। तो वो सोच रही है कि मुझे एमबीबीएस बनना था और मैं आयुर्वेदिक बन गई। तो इतने साल के बाद भी वो चीज को वो भूल नहीं सकती है। So can anyone say about the medicine and case? Please raise your hand, or please put your comment. There are number of the students and faculties. Please, anyone want to discuss about this case? Please tell me. Unmute your mic and please tell me. What do you want to prescribe? What's your understanding about this case? Anyone? Sneha Pandidar, according to patient's totality, Natrum may be simillimum. Okay, good, Sneha. Anyone? Tarjani, Natrum, good. So this is a very clear case. Let's see totality. I have prescribed Natrum definitely on the basis of totality. Let's see totality. Patient is very introvert and reserved. 1 minute. No problem. Let's see totality. पेशेंट इज रिजर्व एंड इंट्रोवर्ट। उसको बचपन से ही बोलने की आदत नहीं है। कोई गेस्ट भी आते हैं तो वो चुप जाती है और किसी के साथ सामने से कन्वर्जेशन नहीं करती। दैट टाइप ऑफ इंट्रोवर्ट एंड रिजर्व पर्सनालिटी ऑल्सो सप्रेस एंगर थ्रू आउट द केस। Delusion, she is not looking good. Desire salt, sour and spicy. Aversion milk 3 mark. Hot patient and headache, sun exposure or summer. First 15 days, I was prescribed medicine sulfur 201 dose on the basis of antisoric, or there are lots of suppression by allopathic medicine. So I have started my case with the sulfur 201 dose, and after 15 days, I have prescribed Natrum Mur on the basis of totality, Natrum Mur 201 dose and SL for 15 days. And over period of time, I have used Natrum Mur 201 dose weekly as per needed, and Natrum 1 dose at every 15 days for 2 months. Once patients felt better 60 to 70%, then I have only used SL for 3 months. So let's see result of the patient. So see, before infectious eczematoid dermatitis, this is the case, and after 9 months of treatment, you can see result in second photograph. So main diagnosis infective eczematic dermatitis, ailments from grief, honor and wounded. That is mainly during her 12th result, and remedy Natrum. The second case. So I don't want to discuss each and every case with you because we have a few minutes for discussion, then last 10 to 15 minutes for the question. So let's see direct totality. I'm going to present
present totality and medicine. This is the totality for second cases. Ailments from suppressed emotions, ailments from disappointment, ailments from silent grief, anxiety of the conscience, anxiety about family health, conscientious about triple, delusion he has done wrong, fear of contagion, silent grief, and reproaching oneself. So this is again wonderful case. I have prescribed medicine on the basis of totality. Sadness, weeping when alone, dreams of robbers, offensive perspiration, desire sweet, aversion milk, and chilly patient. I have started this case with the sorinum because this is a case of the psoriasis. I have used intercurrent remedy, sorinum 1 1 dose. After that, in my mind there are arsenic, aurum metallicum, natrum, carcinosin, and staphy. Then I repertorize and read Materia Medica. I started to find out remedy natrum ars from different book, and I found this remedy from Phatak and Boric, but with very short description. Then I read from Prisma, Trans Vermilion, and lastly I have selected Natrum Ars 201 dose. There are so many confusions in my mind about the arsenic aurum, natrum, and carcinosin and staphy. So lastly, I have selected Natrum Ars 201 dose TET SL for 15 days. And then Natrum Ars 201 dose weekly, Natrum Ars 203 dose every 15 days, Natrum Ars 203 doses weekly, and lastly Natrum Ars 1M 1 dose weekly. Let's see result. So after 4 months of treatment, patient experienced severe attack of asthma in January 2016. So I have prescribed acute remedy on the basis of acute totality, arsenic alb 30 TDS for 3 days and SL for 1 week. After 1 week, 50% better. So SL continued for 1 week, and after 2 days, again attack of asthma. So again I prescribe arsenic alb 201 dose daily for 3 days. And after 1 week, 70% better, then SL for 1 week, and then I have started again constitutional medicine, that is Natrum Ars. In between, patient had suffered from the asthma. So diagnosis psoriasis you can see in photographs. There are ailments from loss of job and divorce. ये दोनों ailments from थे, और I have selected medicine Natrum Ars. This is a case of the PCOD. मेन हिस्ट्री में पेशेंट का 2 बार एंगेज हुआ है और दोनों बार एंगेज ब्रेकअप हो गया है. उसकी इफेक्ट पेशेंट के ऊपर ज्यादा है. तीसरी बार जो भी उसके फियांस है वो बहुत अच्छा नेचर है उसका, फिर भी पेशेंट को जो पास्ट है वो माइंड में से निकल नहीं रहा है. और 2-3 इतने कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल जनरल हमको मिले हैं. लेट्स सी टोटालिटी. एलिमेंट्स फ्रॉम एंगेजमेंट ब्रोकन, रिप्रोच इज हरसेल्फ. पेशेंट को जो भी चीज होती है, एंगेज भी ब्रेकअप हुआ उसका भी वो अफसोस है, रिमोर्स है, वो उसके ऊपर ही है कि भाई वो ऐसे बोलती है कि भाई मेरे हिसाब से हुआ, मैं अच्छी नहीं थी, मेरा नेचर अच्छा नहीं था, इसलिए मेरा ब्रेकअप हो गया. तो जो भी चीज हो रही है उसके लिए भी वो अपने को ही जिम्मेदार मान रही है. दैट इज अ रिप्रोच इज हरसेल्फ. फियर वर्ड्स एट नाइट, फियर समथिंग विल हैपन, इजीली फ्राइटेंड, इजीली स्टार्टेड. फियर बैड न्यूज, डार्क, frightful dreams, palpitation after thunderstorm. This is a particular characteristic physical general, palpitation after thunderstorm. And anxiety about work, weeping when alone, desire fried food or pungent ice cream or cold drinks. Aversion milk, chilly patient, उसको जो भी सावर फूड है उससे एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है. और ये दो जो हमारे दूसरे फिजिकल पर्टिकुलर है और एक फिजिकल जनरल है. Urging for stool after coition, a very particular which is presented in the case, urging for stool after coition. Headache during thunderstorm, जब भी स्टॉर्म आता है या मॉनसून आता है उसको हेडेक शुरू हो जाता है. ठीक है. सावर वॉमिटिंग ड्यूरिंग हेडेक, इरेग्युलर लेट मेंसेस, डिसमेनोरिया है, मेस्टाल्जिया है और ल्यूकोरिया है बिफोर मेंसेस. I selected medicine first Thuja 200,
because there are strong psychotic miasm. So I have started my case with the anti-miasmatic, anti-psychotic remedy, that is a Ruja 200, and then I prescribe Natrum Phos 30 BD for 3 days, and Natrum Phos 200 3 doses every 15 days till last sonography. Let's see sonography. This is the first sonography which I've done. Which I've done on 7th June 2019, and it shows polycystic ovary PCOD. In second sonography, 9th December 2019, it shows no significant abnormality seen in this study. So this is the result. This is the power of the homeopathic medicine. Main diagnosis PCOD and ailments from engagement broken 2 times, brooding and self-reproaches. On the basis of that, I prescribe medicine Natrum Phos. And this is a good case of the weeping eczema. पेशेंट को वो आउट ऑफ गुजरात की है, तो गुजरात जो गुजरात में आए तब से उसको अकेलापन महसूस होता है, यहाँ किसी के साथ मिक्स नहीं हो रही है, और उसको ऐसा ही लग रहा है कि भाई मेरा कोई है ही नहीं, ठीक है। और ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल जनरल है, सावर 3 मार्क, सॉल्ट और स्पाइसी 3 मार्क। उसका स्लीप स्लाइटेस्ट नॉइज से डिस्टर्ब होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल जनरल और मेंटल, ये पेशेंट का मेंटल है। पेशेंट इज वेरी जेन्युइन, अनसेल्फिश और इंडिपेंडेंट, वो सबको ऑलवेज हेल्प करने के लिए रेडी है। These are the few questions which I have asked directly here. एंजाइटी, उसको स्नैक का ज्यादा फियर है और थंडरस्टॉर्म का 3 मार्क फियर है, और ओवर सेंसिटिव टू नॉइज और स्टार्टेड इजीली। उसका बच्चे की चिंता उसको ज्यादा रहती है, ठीक है। लास्ट में उसने क्या बोला, सी टोल्ड मी અહીંયા એકલું એકલું લાગે કેમ કે અમારા લોકો અહીંયા ના હોય તો વાતો કોની સાથે કરવી, બરાબર, ત્યારે ત્યાં વધારે ગમતો હતો। ધીસ આર ધ મેઇન ફીલિંગ્સ एंड कोर ऑफ द पेशेंट, कि वो अकेले है। एक्चुअली वो अकेले नहीं है, आज उसके नेबर में बहुत सारे लोग हैं, मगर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली हूँ। तो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स, अबेंडेंट फीलिंग, उसको अकेला महसूस होता है, सिंपैथेटिक है, काइंड और अनसेल्फिश पर्सन है, सेंसिटिव टू मदर इन लॉ, suppress anger, fear thunderstorm, snake, anxiety about children, oversensitive to noise, started easily, and chilly patient. So on the basis of core and nucleus of the totality, I prescribe Natrum carb, because Natrum carb is very unselfish remedy, tendency to sacrifice, दूसरे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ रिकॉग्निशन, कुछ रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मगर दूसरे के लिए वो जीते हैं, डिवोशन उसको बोलते हैं। Natrum carb 200 1 dose, then 3 doses is per required. Let's see, this is the first picture before weeping eczema, after 3 months you can see, and after 6 months you can see only there are some blackish discoloration. So diagnosis eczema, ailments from abundant feeling, and Natrum carb was the medicine. Let's see case 5. Again, this is the dermatological cases. ए पेशेंट मेरिड है और उसके हाथ में इतनी गंदी स्किन है, इतना क्रैक्स है, फिशर है। हमने डायग्नोस उसका किया है एक्जिमेटोइड विथ केराटोडर्मा, और इसको फैमिली में इतना प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि उसको कोई भी खाना भी बनाने नहीं देते हैं, किसी को टच करने नहीं देते हैं, क्योंकि उसका हैंड ही ऐसा है कि सबको ऐसा डर है कि भाई हमको इन्फेक्शन लग जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो उसके हिसाब से पेशेंट की स्लीप भी डिस्टर्ब हो गई है, थॉट उसके माइंड में कंटिन्यू आते रहते हैं। पेशेंट मेनली मिडिल फैमिली में से है, ठीक है, पूरी हिस्ट्री में नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत सारा पेशेंट ने बोला है, डायरी का हम आपको टोटलिटी बताते हैं। दिस इज द टोटलिटी ऑफ द फिफ्थ केस, सप्रेस एंगर। उसको जब घर में ऐसा बोलते हैं कि आपको खाना नहीं बनाना है, आपको किसी चीज को टच नहीं करनी, इवन उसके चाइल्ड है उसको भी टच करने के लिए उसको रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है सबको, उसके सास और सबको, कि उसको इन्फेक्शन लग जाएगा।
तो उसको अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है मगर वो बाहर नहीं निकाल सकते हैं। सैडनेस ड्यूरिंग वीपिंग, पेसिमिस्टिक, होपलेस, अभी उसको जो उसकी तकलीफ है उससे वो इतनी डिस्पेयर हो गई है कि भाई मुझे ये ठीक होने वाला ही नहीं है, वो नेगेटिव थॉट्स ही उसके माइंड में कंटिन्यू चल रहा है। डिस्पेयर अबाउट रिकवरी, वीपिंग व्हेन अलोन, थिंकिंग परसिस्टेंट, उसके बारे में कॉन्स्टेंटली वो थॉट थिंकिंग प्रोसेस उसकी चल रही है। सेंसिटिव टू नॉइज और रेप्रीमेंड, उसको कोई भी वो स्कोल्डिंग करे या रेप्रीमेंट्स करे, कोई उसके बारे में बोले, क्रिटिसाइज करे तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है, गलत लग रहा है। फियर ऑफ रॉबर्स, ड्रीम स्नैक्स एंड रॉबर्स एंड डेड पर्सन, एंटीसिपेटरी एंजाइटी अबाउट द चिल्ड्रन एंड फ्यूचर, aversion milk 3 mark, headache, fasting and sun and hot passion. On the basis of totality, I have prescribed Natrum Mure 200 one dose every 15 days, then Natrum Mure 200 one dose every week, and ultimately last Natrum Mure 1 m. Increase all complaint after 6 months. Also, you can see calcaria was the DD. See result, Palmer keratoderma. This is the before the treatment. Main elements from conflict with mother-in-law and suppressed anger, and remedy was given Natrum Mure. I got this result within 1.5 years. This is the 6th case. Patient is working in RTO ऑफिस। पेशेंट को पहले से गवर्नमेंट जॉब में बहुत इंटरेस्ट था और उसको नायब मामलतदार उसमें उसको आगे बढ़ना था, मगर वो एग्जाम में फेल हुआ। तो फेलियर के बाद उसको इतना डिप्रेशन आ गया तो उसका नेचर ही पूरा चेंज हो गया। बाद में उसको एक दिन पूरा चिक्स में बियर्ड एरिया पे मसा हो गया। ठीक है, तो उसका मैंने लिया है डिसअपॉइंटमेंट, मेंटल शॉक। पेशेंट का मेन थीम है नॉट टू हर्ट, नॉट टू बी हर्ट, टू हर्ट बट नॉट टू बी हर्ट। पेशेंट का नेचर बेसिकली ऐसा है कि मुझे कोई हर्ट करे तो भी पसंद नहीं है और मुझे किसी को हर्ट करना भी नहीं है। कभी ऐसा होता है कि कोई दूसरे लोग उसको हर्ट करते हैं फिर भी पेशेंट उसको हर्ट नहीं करते हैं। टू हर्ट बट नॉट टू बी हर्ट, दिस इज द कोर ऑफ द पेशेंट। And persistent thoughts, anticipatory anxiety, fear, robbers and snack. Patient was very responsible and sympathetic. Desire to be alone, thirst, cold drinks and headache, reading noise and sun, relieved by pressure on eyes. I prescribe again Natrum Mure 33 doses, then Natrum Mure 200 one dose, and then Natrum Mure 1 m one dose as per required. Let's see. This is the warts. You can see before. This bunch of warts, multiple small blackish non-blemish, and after 9 months of treatment you can see this is the result of Natrum Mure, this is the result of homeopathy. So disappointment after failure in exam, elements from last case. Again this is a case of warts. There are bunch of warts, cluster of warts over the beard area. पेशेंट ने उसके फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। छोटे थे तब से उसने कमाना शुरू कर दिया, उसका फैमिली, उसके जो ब्रदर है छोटे उसको उसका शादी करवाया, उसकी सिस्टर है उसकी शादी करवाई, बहुत कुछ फैमिली के लिए पूरी उसने लाइफ है ना वो वेस्ट कर दी है। और बाद में पेशेंट जो है उसका फादर एक्सपायर हो गया, फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी आई तो भी उसने सब भी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाई है, मगर फिर भी उसके जो फैमिली मेंबर है वो ऐसे बोलते कि आपने किया ही क्या है। ठीक है, तो पेशेंट का बहुत बुरा लग रहा है। पेशेंट वांट्स एप्रिसिएशन, मैंने जो किया है, पेशेंट ने हमारी लैंग्वेज में ऐसा किया है कि मेरे हाथ में ना जस की रेखा ही नहीं है, मैंने इतना कुछ लोगों के लिए किया है मगर मुझे कभी भी जस्ट नहीं मिला है, एप्रिसिएशन नहीं मिला है। तो वो उसका मेन थीम है पेशेंट का। और इसके हिसाब से पेशेंट लास्ट 5 ईयर से इतने डिप्रेशन में चले गए, किसी से बात नहीं करते हैं, किसी को बोलना अच्छा नहीं लगता है, बस अकेले अकेले वो जो है वो कभी कभी और रो देते हैं। ठीक है, वो जेंट्स होके भी वो कंट्रोल नहीं कर सकते उसका इमोशंस, ऐसा उसका माइंड हो गया है। और उसको लास्ट सेंटेंस पढ़िए, ही इज ड्रीम्स ऑफ क्वारल्स विद ब्रदर्स एंड ही सडनली स्टार्टेड फ्रॉम स्लीप। उसका ब्रदर्स के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको और क्वारल्स हुआ है उसका भी उसको ड्रीम्स आ रहा है, सबकॉन्शियसली वो सब वहां रिलीज हो रहा है। तो नींद से उठकर उसको एक एंजाइटी फील होती है, स्लाइट नॉइज भी उसकी स्लीप में डिस्टर्ब कर देती है।
These are the totality. Suppress anger, suicidal thoughts, wants to die, wants to lie. पेशेंट का मेन जो कोर है वो है wants to die and wants to lie. ये सब पेशेंट के साथ जो हुआ है उससे पेशेंट का इतना डिप्रेशन बढ़ गया है कि उसको मरना भी है, मगर दूसरी बार उसको थॉट्स आ रहा है कि मुझे जीना भी है. तो बिटवीन स्टेट में पेशेंट को कंटिन्यू सुसाइडल थॉट्स आ रहा है. wants to lie alone, feels alone, doesn't like to talk. Patient was very responsible, honest and want to appreciation, not appreciated. पेशेंट को वो चाहिए कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे, मैंने जो भी करके मेंबर के लिए किया है उसके लिए मुझे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, बट नॉट अप्रिशिएटेड. ड्रीम्स ऑफ quarrels. On the basis of this totality, I use Natrum Sulf. Natrum Sulf, DD Staphysagrina. Natrum Sulf 30 then 200 as per required and followed by S. Let's see result. These are the result. You can see multiple warts over the beard area. After 3 months, you can see only few lesions were remaining, and after 7 months, all warts gone with the Natrum Sulf. So diagnosis warts, elements from conflict with the family and suppress anger, and prescribed medicine was Natrum Sulf. So let's see discussion. Dr. Samuel Hahnemann, the founder of homeopathy, recognized early on that not all the disease stems solely from the physical causes. He identified a group of disorders that originate primarily from the emotional disturbance, such as prolonged grief, suppressed anger, resentment, humiliation, fear, repeated pride. These emotional states, though accompanied initially by only minor physical symptoms, then gradually lead to significant deteriorations of the physical health. This classical homeopathic perspective reflects what is now widely referred to as a psychosomatic illness. So people believe nowadays in 21st century there are maximum disease are psychosomatic. Cause is psych. So where emotional suppression play a key role in disease development. In aphorism number 226 of the Organon of Medicine, Hahnemann emphasizes that such disorders, if addressed in their early stages, can be effectively managed through a combination of psychotherapy, healthy lifestyle, and homeopathic treatment. He associates this condition with the psoric miasm, suggesting that anti-psoric remedy can offer considerable therapeutic benefit. This understanding is particularly relevant to individuals with Natrum personality who are known for their silent suffering, inward grief, and emotional isolation. These individuals often internalize emotional trauma, that is psychic trauma, suppressing their need for support or expression, which can manifest as a chronic physical or psychological disorders. Out of total 300 cases, Natrum medicine was prescribed in 156 cases. Among these, 52 patients were male and 104 were female. All 156 cases were chronic in nature. Based on the age distribution, there are various patients from the different age group, but you can see, as I have told you, maximum cases from 31 to 40 years of age and 21 to 30 years of age. In the 156 cases where medicine from Natrum group were administered, intercurrent remedy were also used in selected cases where clinically indicated. Among these cases, significant improvement was observed in 96 patients, moderate improvement in 41 patients, no change, that is status quo in 9 cases, and 10 patients discontinued treatment. Summary and conclusion. This study demonstrates that homeopathy, when combined with counseling and psychotherapeutic support, is effective in managing chronic diseases caused by emotional suppression. Among the 300 chronic cases examined, a significant number reflected the Natrum typology. Patients who internalize grief, disappointment, or emotional trauma, often without outward expression. Through the careful use of indicated remedies, particularly from the anti-psoric group, patients experience significant relief on both emotional and physical level. Timely repetition of remedies without aggravation help maintain progress and prevent relapse.
This reinforced the view that homeopathy is not only a system of medicine, but also a powerful tool for addressing deep emotional suffering, offering a path toward holistic and lasting healing. In this study, Natrum group remedies were prescribed in 156 out of 300 cases. There are different psychological condition and clinical conditions. Maximum, I have selected medicine for migraine, 40 cases from the migraine, 20 cases for eczema, 18 for hypothyroidism, 17 cases of depression, and 14 of the psoriasis. So these are the top five disease condition where I have used Natrum. There are also number of the condition are present. Across all cases, the suppression of natural reaction to emotions such as anger, disappointment in love, loss of employment, status, reputation, and finance or business, as well as experiences of disrespect, domination, insult, wounded pride, rejection, humiliation, bad news, reprimands, and scolding, activated the fight and flight responses. This emotional internalization was a key factor in the development of disease, primarily rooted in the adverse effect of emotional suppression. These all are the causative and elements from. Psychosomatic condition including migraine, hypothyroidism, atopic dermatitis, depression, peptic ulcer, hypertension, ulcerative colitis. These all are the psychosomatic cases where we can use homeopathic medicine and we will get wonderful result. Homeopathy plays a vital role in treating psychosomatic disease that often stem from emotional suppression, especially in Natrum personality, known for silent suffering and hidden grief. In the modern era, homeopathic medicine holds a significant and promising role in treating psychosomatic disease, many of which stem from history of emotional suppression. Therefore, it is apt to say that homeopathy is the best stress reliever for unresolved emotional conflict. So these are my study which I have done during my PhD. These all are the bibliography references which I have taken during my study. These all are the reference books. These all are the links which I have used for my study. Thank you. Anyone have any doubt, question, you can ask freely. Over to madam. Thank you, sir. Thank you so much for the wonderful session. We are overwhelmed that to learn regarding the in detail and depth regarding the hiding of the emotions in relation to the NAT group. Thank you so much, sir. Thank you all the participants for their active engagement in the session. So there is a small announcement here. So we have given the WhatsApp group in the chat box. So further notifications or the further webinar details will be embedded in the WhatsApp group. So whoever want to like join in the WhatsApp group, they are welcome for the upcoming webinars and to have the notice regarding the upcoming webinars or any other notifications regarding the Asia. So and all the certificates will be issued whoever have been done the registration in the Google form with the correct name and all with a very soon. And hope you all enjoyed the session and we'll be get back with more sessions. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you Okay. all the Okay. participants. Thank you, madam. Thank you.